Hello everybody, welcome back to another video. In the previous video, we talked about what exactly Python is, why we are learning Python. हम Python ही क्यों use कर रहे हैं? Why we are not using any another programming languages, right? The use of Python, right? Why we are using Python for data science, artificial intelligence related problems. These things we talked about in the previous video, but in this video we will see how to download Python into the system. Again, summarize it quickly. In the previous video we have seen why we are using Python. Python is a simply programming language similar to C, C++, Java जो मार्केट में और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं सिमिलर पाइथन भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है as simple as that. But why we are using only Python? Because पाइथन के अंदर ऐसे फीचर्स हैं जो डेटा साइंस की प्रॉब्लम्स को इजीली एंड फास्ट सॉल्व कर देते हैं, राइट? आई कैन यूज जावा ऑल्सो, बट वहाँ पे 100 लाइनों का कोड होगा, बट ओवर देयर इन पाइथन आई कैन सॉल्व दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम विद इन 10 लाइन्स ऑफ कोड यूजिंग अ लाइब्रेरी, है ना? These things we talked about earlier, but now today we will download a Python. Just go to the Google, just simply write Python download, as simple as that. So Python is a programming language. Whenever you go to this, there is an official website for this. Just click on this download Python. I already downloaded Python into my system. What you have to do, just double click on this. When you click on this 3.12, this is the latest version and it will getting installed into your system. Whenever it's downloaded, just double click on that, it will getting installed into your system. It very simple it is. Download होने के बाद you have to just double click on that to download a Python, right? And just click on next, वो download हो जाएगा simply, right? But again we have understand Python कैसे download हो रहा है. Along with that, I will tell you the frameworks of Python. What exactly frameworks are? बहुत ही easy है, बहुत easy. Now come to me. If I ask you one simple question, do you know what exactly car is? Any car I'm talking about. What exactly car is, right? कार एक क्या है? कार के अंदर सबसे पहले एक important factor है जिसे हम बोलते हैं engine, right? So engine and car, they are two different factors, right? अगर कार के अंदर engine नहीं है, so there is no use of a car, right? It's a body simply. The similar manner. जो हमने पाइथन अभी डाउनलोड किया है, इट इज एन इंजन ऑफ माई कार, राइट? दैट मीन्स अगर मेरे पास इंजन है और अगर मुझे कार ड्राइव करना है, आई नीड अ बॉडी ऑल्सो, राइट? सो आई हैव डाउनलोडेड इंजन, राइट? नाउ आई नीड अ बॉडी. वेयर डू आई गेट द बॉडी? उसी बॉडी को आई एम सेइंग फ्रेमवर्क, राइट? So Python is an engine and framework is nothing but go to the Google. There are many frameworks in Python. एक famous framework है, I'm saying VS Code. Just go to that. Visual Studio Code, right? There are multiple frameworks. I can give you one example. For example, of a car, Tata, right? Tata is a car, right? Tata की बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, महिंद्रा की बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, right? तो हर गाड़ी में इंजन होता है, right? इंजन होता है, एंड तो चेंज क्या होता है? चेंज होता है बॉडी, राइट? ईच एंड एवरी कार, मोस्ट ऑफ द कार्स में का इंजन सेम होता है बट बॉडी डिफरेंट हो जाती है, राइट? द सेम मैनर पाइथन जो हमने डाउनलोड किया है, इसका इंजन सेम होगा, राइट? देन व्हाट विल बी द डिफरेंट? डिफरेंट विल बी फ्रेमवर्क. अगर आपने सुना हो VS कोड एक फ्रेमवर्क है, दूसरा फ्रेमवर्क एक जुपिटर नोटबुक है, राइट? एक और फ्रेमवर्क है पाईचार्म. बहुत सारे फ्रेमवर्क है. उन फ्रेमवर्क्स के बारे में वी विल टॉक अबाउट in the upcoming videos, but right now you have to understand framework is nothing but a body, right? And Python we just downloaded, it's nothing but an engine. जब हम दोनों को merge करते हैं, merge we mean to say, सर हम दोनों को यूज क्यों कर रहे हैं? पाइथन डाउनलोड किया, engine रेडी हो गया, देन मैं अगर खाली engine चलाऊंगा तो आई कैन नॉट ड्राइव अ कार, राइट? अगर मेरे पास खाली इंजन है, आई कैन नॉट गो फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस बी. आई कैन नॉट गो विद माई फैमिली, राइट? हाउ कैन आई गो? आई नीड अ बॉडी, राइट? मुझे बॉडी चाहिए होगा. बॉडी आई एम ट्राइंग टू से दैट इज अ फ्रेमवर्क. फ्रेमवर्क अपने पास कौन सा है? VS कोड. Go to that link and there's an option to download for Windows. If you have a Mac also download करना, right? Whenever it will download the framework, जैसे ही framework download हो,
and then restart your system. It will pick Python automatically, right? Python को install करना है, VS Code को download करके install करना है, next next next, and then restart your system. So ये जो body जिसको हम framework बोल रहे हैं, it will pick engine automatic, right? यानी कि Python को automatically detect कर लेगा in your system. As simple as that. Then how it looks like? I will open VS Code from my end. It will looks like this. I can show it to you. Come on, come on, come on. It's opening from my end. Okay, it's open. Basically, I can show it to you here. You can see this. You can see this. This is the VS Code looks like, right? Here you can see left hand, right hand side way at the bottom. Can you see this Python? It is detecting automatically, right? Python automatically detect the auto detect, right? As simple as that. So this is the look and feel of VS Code looks like. Again, in the upcoming videos, we will work on this VS Code, Jupyter, Google Colab, and all that stuff. Along with that, I want to tell you one more thing. एक और फ्रेमवर्क है जो कि बहुत फेमस है, दैट इज अ गूगल कोलैब. व्हाट इज गूगल कोलैब? ये एक और फ्रेमवर्क है, बट ये फ्रेमवर्क फ्री ऑफ कॉस्ट है, राइट? इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, provided from the Google. Google is a company. Google provide the Google Colab for each and every one free of cost. Then, sir, how we can use this? How we can use this? It is simply a web based. It is a web based framework. जो हमने VS Code डाउनलोड किया है, it is not a web based, right? Without internet we can access VS Code, but Google Colab is a web based. We need a internet for this Google Colab. Then so benefit क्या है? Benefit ये है, if you are working on this Google Colab, you don't need to download Python. आपको Python डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है. No need to download Python, right? It will automatically work on that, right? Here you can write a code. These things we'll see that when we start working on a code. As simple as that. Google Colab is a framework from the Google side free of cost जो हमें मिलता है, and is a web based. यहाँ पे हमें Python अलग से डाउनलोड करने का रिक्वायरमेंट नहीं होता. That is it for this particular video. How to download Python, how to download VS Code जिसको हम framework बोलते हैं, and then what exactly framework stands for. That's something we talked about for this today's video. Rest things we will discuss to the next video. Thanks for watching it. Bye bye.